हेलो फ्रेंड्स प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि होची ग्रुपिंग्स रो लास्ट 3 वर्ष हेलानी क्वेश्चन पचारछि जेमति कि एलियंस सब साहेल हे गला G20 विषय फाइव आईज विषय करंट अफेयर्स रे ग्रुपिंग्स गोटे मेजर रोल प्ले करूची गोटे ना दीटा क्वेश्चन पचारि थाउची ही थाउची ओके तो मु तमन पई जो एई वर्ष जहा जहा ग्रुपिंग्स न्यूज रे अछि पूरा एकदम करंट रे ट्रेंड रे अछि मु तार गोटे कंपाइलेशन नै कि आसी सो दैट आपण मानको रिवीजन ने बहुत ही हेल्प हबो ठीक अछि तो स्टार्ट करिबा ग्रुपिंग्स रु प्रथम होची कोन ना पैक्सिलिका एटा आपरो पीआईबी रो न्यूज रे भी थिला कि इंडिया जॉइन्स पैक्सिलिका एट इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जोटा कि रिसेंटली गला हाँ कि नहीं तो ये जो फेब्रुआरी 2026 रे माने एबे रिसेंट हे जी पैक्सिलिका बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज रे कोन थिला इंडिया फॉर्मली जॉइन्स द यूएस लेड पैक्सिलिका इनिशिएटिव एट द इंडिया एआई समिट न्यू दिल्ली रे जो इंडिया एआई हाँ या सहित पैक्सिलिका तो इंपोर्टेंट इंडिया एआई एआई इंपैक्ट समिट जोटा न्यू दिल्ली रे हितला तार आउटकम्स कोन कोन थिला की पार्टिसिपेट करथिले कोन नहीं एटा भी बहुत ही इंपोर्टेंट तो यार गोटे आउटकम थिला पैक्सिलिका जोटा कि यूएस लेड करूची है ना कौन एटा इट इज ए US led strategic coalition to build a secure resilient innovation driven silicon and AI ecosystem with trusted partners हला US रो led गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे इनिशिएटिव जोटा कि गोटे स्ट्रेटेजिक कोलिशन बिटवीन कंट्रीज टू बिल्ड सिलिकॉन एंड एआई इकोसिस्टम हैला फर्स्ट समिट कोठी हिची ना वाशिंगटन डीसी डिसेंबर 2025 रे तार फर्स्ट समिट हेतिला वाशिंगटन डीसी किए पैक्सिलिका रे मेंबर अछन सबुठु इंपोर्टेंट मेंबर्स कंट्री पचारि परिबो कोन यूएसए कतार ऑस्ट्रेलिया इजराइल जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया सिंगापुर यूनाइटेड किंगडम हला ए जो मेंबर्स यू हैव टू रिमेंबर हला एको नै कि मेंबर आइदर पैक्सिलिका रो मेंबर्स पचरो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पचला जदी निश्चित मेंबर्स कथा थिबो कोठी हेइथिला किए लेड करची ए सब कंटेंट स्टेटमेंट रे दे ही थिबो ओके कोन यार ऑब्जेक्टिव पैक्सिलिका रो थिला टू रिड्यूस कोरेसिव डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल कंट्री हला गोटे कंट्री ऊपर डिपेंडेंस एआई एंड सिलिकॉन्स पई हबार नाही ओके सिक्योर एआई क्रिटिकल मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज एनेबल लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज मेजर एगुडा को ऑब्जेक्टिव कोन से मु सदा बेले जतले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करैछि पीएसएस बैच रे पिला मानु जतले मु पढाइछि सदा बेले कहिछि जतले कोनोसी गोटे गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव जोटी इंडिया साइन करिछि किबा इंडिया गवर्नमेंट रो गोटे को पोर्टल को गोटे स्कीम कि बा गवर्नमेंट रो को गोटे मिशन गवर्नमेंट रो को गोटे स्कीम जतले ता पर कोनोसी क्वेश्चन फ्रेम हेतिबो तार जतले एम बा ऑब्जेक्टिव बा पर्पस देइथिबो से स्टेटमेंट सदा बेले ठीक हेतै केबे भी कोनोसी से स्टेटमेंट आज जाय भूल हबार मु देखि नै जोटा मोर ऑब्जर्वेशन तो एम एंड ऑब्जेक्टिव जहां भी देइथिबो सेटा करेक्ट ही देइथिबो मेजर कमिटमेंट तार कोन कोर कमिटमेंट्स जॉइंट प्रोजेक्ट अक्रॉस जॉइंट प्रोजेक्ट क्रिटिकल मिनरल्स कहा कहा को मेजर एरिया रे जॉइंट प्रोजेक्ट गुडा का हबो क्रिटिकल मिनरल्स रे सेमीकंडक्टर डिजाइन फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी ग्रिड्स है ना प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम कंट्रीज ऑफ कंसर्न तो मेजर दिन हला कोन innovative way to protect our silicon AI ecosystem compute infrastructure semiconductor ako protect kariba okay so global आउ जहा रहला तो मेजर हला एतिकी दिनस को तुमको पढियार अछि पैक्सिलिका विषय रे पैक्सिलिका क्वेश्चन आसेबार बहुत ही हाई चांसेस अछि ओके देन मु एटी न्यूज एथि पई लगे न्यूज कटिंग की रिसेंट न्यूज हला 2000 अप्रैल रो न्यूज एटा साउदी पाकिस्तान फैक्टर बिहाइंड यूएस एग्जिट फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस बोथ आर इन न्यूज बिकॉज ऑफ द गल्फ कंट्री इनस्टेबिलिटी जहा चली से ओपेक आ ओपेक कंट्री बहुत ही इंपोर्टेंट है ओपेक विषय आम लिटिल बिट तार डिटेल्स देखा ओपेक रो इट वाज फाउंडेड इन baghdad इराक बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट इन सेप्टेम्बर 1960 ओपेक मन रखिए 1960 ईयर ओपीसी पचारुची यू कैन नॉट स्किप द ईयर है ईयर मन रखिए ओपेक 1960 रे फाउंड हेतिला इन baghdad इराक ओके बाय 5 कंट्रीज इनिशियली 5 कंट्रीज थिले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला टोटल 12 मेंबर्स नाउ ईरान इराक कुवैत यूएई Saudi Arabia, Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Equatorial Guinea, Congo, Republic of Congo and Venezuela are members of OPEC हैला एंड अंगोला 2024 रे जॉइन करथले 2019 रे कतर लास्ट जो सॉरी अंगोला और कतर एग्जिट करथले लास्ट जे एग्जिट करथले इक्वेडोर
इक्वेडर एंड इंडोनेशिया आर फॉर्मर मेंबर से माने थिले कि जो माने एग्जिट कर जाई छथि ओके आर हेडक्वार्टर कोठी ना वियना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया Vienna, Australia headquarter. OPEC membership is open to any country that is substantial exporter of oil and which share the ideals of organization. hala majorly oil exporting country manankar gote grouping. Okay. Objective say objective coordinate and unify petroleum policies among member countries to secure fair and stable prices for petroleum producers and efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nation and fair return on capital to those investing countries. Okay, so this is objective is not important. Objective pacharibo na jodi bi statement re deithibo it is correct. Okay, main din sala member total 12 members and those who are exit hala. Okay, so this is the thing. And OPEC plus ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ news ରେ ବି OPEC plus ବି news ରେ ଥିଲା OPEC plus भी कौन थिला OPEC plus is an expanded alliance of oil producing countries undertaking corrections in supply in the oil markets in 2017 परठु OPEC plus आसीछि तो 2017 परठु OPEC plus आसीछि जोटा कि OPEC रो गोटे expanded जिनस तार मेंबर की अछंती माने जो माने OPEC रे नाहंती कि एक्स्ट्रा मेंबर्स अछंती अजरबैजान बहरीन ब्रुनेई Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, South Sudan and Sudan. These are the members of OPEC plus. Okay. So OPEC and OPEC plus important जेहेतु न्यूज रे अछि OPEC can be asked. Okay. So आउ गोटे सेमती important groupings देखिबा IEA. IEA कोन ना तमरो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. Government of India welcomes IEA decision to release emergency oil stocks amid prevailing supply disruption. तो इंडिया सिक्स टू तो आईईए इज इन न्यूज कन्स्टेंटली मार्च रे न्यूज रे आस्तिला फेब्रुअरी भी थिला वार पई भी न्यूक्लियर जो आईईए रो इन्वेस्टिगेशन ईरान रे हबा पई सी भी न्यूज रे थिला सो आईईए इज ए इंपोर्टेंट बॉडी सो विल देखि आईईए विषय देखिबा इंडिया रे कोन रिलेशन कोन नाइ हम देखिबा at its recent annual ministerial meeting in Paris एबे तार पेरिस रे लास्ट वीक रे तार मतलब मार्च रे annual ministerial meeting हेतिला that the international energy agency welcome the progress being made on India's request to full membership of the organization actually कोन ना इंडिया रिक्वेस्ट करछि आईईए रे गोटे फुल फ्लेज मेंबरशिप नबा पई जोटा कि आईईए वेलकम करछि and probably it will be accepted as of now India is an associate member okay कौन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आईयूए केबे क्रिएट हेतला ना 1974 रे 1974 रे मु ईयर एथि पय सब कंटेंट रे रखि छै बिकॉज़ ईयर पचरु छै 1974 रे आईईए क्रिएट हेतला टू हेल्प कोऑर्डिनेट एंड ए कलेक्टिव रिस्पांस टू मेजर डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑयल where oil security remains a key aspect of our work and the IEA has evolved and expanded significantly since its foundation. Basically, IEA it is an international agency and autonomous intergovernmental organization established in 1974 within the OECD framework, mandated to ensure secure, sustainable and affordable energy. Okay, and our headquarter कोठी ना Paris रे and it has 32 members. Okay, minister जो मीटिंग हेतला सेतरे कोलंबिया वाज इंडक्टेड एज द 33rd फुल मेंबर जो 32 थिला टोटल आगरो एबे प्लस ऐड हैला कोलंबिया ओके कोलंबिया पे रिसेंटली जो एबे रिसेंट तार मिनिस्टर मीटिंग गला एतरा ऐड हैला एज ए फुल टाइम मेंबर ओके कोलंबिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ ओईसीडी इन 2020 रे ओईसीडी रो मेंबर थिला 10 क्लियरिंग द वे फॉर इट्स इंडक्शन टू आईईए आल्सो it has 8 associate countries 8टा associate country रो इंडिया इज वन ऑफ देम ओके तार कंडीशन कोन फुल मेंबर हबा पई आईईए रो फुल मेंबर हबा पई ओईसीडी रो फुल मेंबर हेतिबा दरकार दिस इज द इंपोर्टेंट थिंग हला स्टेटमेंट जदि देई कि पचार थिबो आईईए रो कोनोसी क्वेश्चन देन इट इज ए क्राइटेरिया कि ओईसीडी रो मेंबर हेथिले ही आईईए रो जॉइन मेंबरशिप पाई परिबा and it must maintain strategic oil reserve equal to 90 days of net imports members coordinate emergency response to global oil supply disruptions hela emergency response जो माने members माने global oil chain disruption जतेबेले हबो सेतेबेले ए माने assistant पाई परिबे ओके तो these three important points for IEA okay सो मु से कथा सेति पई कहूची जो तक न्यूज रे अछि वर्ष सारा चली छी तार गोटे कंपाइलेशन बार बार न्यूज रे आसी थाउची सेति पई मु न्यूज कटिंग भी लगे छी सो दैट यू विल माने एटा तमे बिलीव करिवो एंड प्रूफ मु तुमको दोउची आ गोटे न्यूज रे थिला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हला ग्लोबल अफेयर्स रो गोटे न्यूज आसीथिला द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन शिफ्टिंग ऑफ गल्फ अलायंस एबे जो रिसेंटली जो इश्यूज अछि ताकू गोटे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कोन ना दिस इज ए ईरान लेड कोलिशन who is opposing US, Israel and Western influence in the Middle East. That is why axis of resistance is important because of the Middle East war.
Okay, this is the organization जे completely US and Israel and other western influence middle east रो जो country रो western influence को oppose करूची. So key members तार किए ना ईरान and Lebanon रो जो हिजबुल्ला, हमास, Syrian government, हाउथीज येमेन रो and जो सिटी मिलिटेंट्स इराक एंड सीरिया रो जो अछंती एमान हेले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हला. लेबानन, ईरान, पैलेस्टाइन, येमेन, इराक, सीरिया ए कंट्री रो ए जो ग्रुप्स माने तुम जानि छो हिजबुल्ला एटा भी गोटे टॉपिक हिजबुल्ला लेबानन माने तांकर ये ग्रुपिंग गोटे, हमास होची पैलेस्टाइन रो ग्रुपिंग, हाउथी होचंदी येमेन रो, सिट मिलिटेंट्स होचंदी इराक रो. ये भी यूपीएस रे क्वेश्चन पचरछि आगरु ओपीएस रे पचर न पचरिबार किछि माने भी नै एको भी मने रखिथिबे बट दे आर द मेंबर्स ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज इन न्यूज़. ओके सो बेसिकली तो ये हुए माने मेंबर पचरिबो तारो जदी इवोल्यूशन देखिबो 1979 ने ईरान रे स्टार्ट हेतिला. ओके तापर हिजबुल्ला लेबानन एमाने मिसिले तापर हमास मिसिले. ओके 2002 रे टर्म ऑफ जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टर्म टा गेन पॉपुलैरिटी इन रेस्पॉन्स टू यूएस को जो बुश डॉक्ट्रिन आसले तार रेस्पॉन्स रे एक्सिस ऑफ जो रेजिस्टेंस टा पॉपुलर हेतिला 2002 रे. आर ऑब्जेक्टिव मेन और स्ट्रेटजी कोन कि मेनली ऑपोजिशन टू यूएस, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया. दे आर ए तीनटा कंट्री तुम जानि छो मिडिल ईस्ट ईरान इराक एमान जो रहले एंकर पूरा दुश्मन. एंड टू सपोर्ट फॉर आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, expansion of Iran's influence through proxy groups, use of asystematic warfare and hybrid military tactics. Okay, so these are the thing मेन काम से कौन कौन दी मिलिटरी सपोर्ट देबे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो सब चली सेठी से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहबे एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आल्सो रहबो. दैट इज व्हाई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द मिडिल ईस्ट वॉर, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन न्यूज़. Okay, another grouping is GCC, Gulf Cooperation Council. Again, this is also highlighted due to the war. है India and Gulf Cooperation Council sign joint statement on India GCC free trade agreement. सेथि पई फेब्रुअरी रे आस्तिला न्यूज़. That is why it is important. मु सेथि पई न्यूज़ कटिंग लगै छी. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट रो जो कोन सेटा एयर इंडिया ना कोन अछि जो रेडियो को जो रेडियो मो एयर रेडियो एयर कौन से मु भूली जाउची सेई तार जोटा गवर्नमेंट रो जोटा अछि तार न्यूज़. हां मु भी चाहे भी लगै छी सब ऑथेंटिकेट सोर्स रू गवर्नमेंट वेबसाइट गवर्नमेंट रो डॉक्यूमेंट्स है ना नथिंग फ्रॉम कोनोसी अलगा कोनोसी सोर्स रू नो जोटा कि व्हिच आई डोंट बिलीव. मु केवल गवर्नमेंट रो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट्स एंड सोर्स एंड गवर्नमेंट रो वेबसाइट गवर्नमेंट पॉपुलर जो माने न्यूज़ पेपर्स मु सेइ थ्रू ही कंटेंट निया और सेटा को ही फॉलो करे. मु रिक्वेस्ट करबी त माने सेइटा को ही पढो सेइ थ्रू ही क्वेश्चन आसीबो. इनफैक्ट यूपीएससी also clarified that कि ए बेसिकली ए सोर्स से माने भी फॉलो करछोंती एला कोनोसी गुटे गवर्नमेंट एग्जाम रे ऑलवेज ए सब सोर्स फॉलो हुए. सो आई प्लान ऑल्सो मु गोटे प्लान करिछि कि या परे तमर गोटे पीआईबी रो कंपाइलेशन आनिबी बिकॉज़ पीआईबी इज ऑलवेज इंपोर्टेंट इन मेकिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन. मु जानि आउ कि कोन करंट अफेयर्स सोर्स पढिछो जदि पढिछो तो भलो कथा रिवीजन टाइम में भी रिवीजन करो बट आई विल ट्राई टू मेक ए पीआईबी कंपाइलेशन. एनीवे कम टू द जीसीसी. What is GCC? GCC is established in 1981 by at Riyadh, है ना? And the members 6 members are there: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE. एठी हला रियाद तमरो साउदी रो हेतिला मेनली ए जो कंट्रीज गुडा गल्फ खाड़ी रो जो कंट्रीज गुडा रहला ना साउदी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान. ओके and the official language are Arabic. Why it is formed? Because to geographic proximity माने समस्त ए गुडा गुटे ए रे रहिले Arabian plateau रे रहिले. Similar political system based on Islamic principles and common security and economic interest को पाई एटा फॉर्म हेतिला. ओके जीसीसी रो मॉनेटरी यूनिट कोन मॉनेटरी यूनियन जोटा कि अप्रूव कर जे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर एंड बहरीन, ऑप्टेड आउट ओमान एंड यूएई. Riyadh selected for future central bank. Joint Monetary Council established. Single currency remains long-term goal. Okay, GCC monetary unit not important, but GCC is important because of the Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and UAE. They are the members, and it established in 1981 at Riyadh, and headquarter to Riyadh. And major objective con coordination, integration, and interconnection in all fields. Common regulations in economy, finance, trade, custom, tourism, and legislation. Promote scientific and technical progress. Hala establish research center at joint venture. Encourage private sector cooperation. Basically ए जो countries मानकरे गोटे grouping तांको भीतर coordination
एक्सपर्टीज शेयर प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन रिसर्च जॉइंट रिसर्च ए सब जिन हूँ एमानकर ऑब्जेक्टिव मेनली है ओके एंड ता रिलेटेड ग्रुपिंग्स होचे दे ए जो मेंबर्स यार ए जो सब मेंबर्स अछंती सब गुडाक गैप्टर भी मेंबर्स ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तांको भितर सेठी सब पूरा फ्री ट्रेड हुए हला जीसीसी एम्स फॉर डीपर इंटीग्रेशन एट द देन द गैप्टर सो तार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नॉट इम्पोर्टेंट तो सेटा हो किछि दरकार नहीं बट इंडिया और जीसीसी रो रिलेशन टिके देखिबा स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपोर्टेंट इन जीसीसी इंडिया ପାଇଁ गल्फ इज इंडिया's immediate neighborhood across Arabian Sea obviously Arabian Sea ru immediate neighbor and these countries are critical for our energy security basically we import oil from these countries hala oil and gas also and trade and investment point of view and West Asia रो stability ପାଇଁ भी GCC is very important okay सबुठ बड़ कथा है कौन कि आमर बहुत बड़ अमाउंट गोटे ह्यूज नंबर्स ऑफ इंडियंस जीसीसी कंट्रीज रे रहउछन अराउंड 6 मिलियन इंडियन जो माने जीसीसी कंट्री रे रहउछन ओके एंड गोटे भलो अमाउंट रेमिटेंस भी सेटू माने इंडिया कलेक्ट करे इंडिया एक्सपोर्ट टू जीसीसी 45.36 बिलियन यूनाइटेड स्टेट यूए माने डॉलर एंड टोटल ट्रेड होची केते 145.72 बिलियन डॉलर ओके सबुठ या भितर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किए ना यूएई एंड नेक्स्ट होची सऊदी अरेबिया ओके मेनली इठु हमें इंपोर्ट करंती ऑयल एंड गैस ओके दैट इज व्हाई जीसीसी इज इंपोर्टेंट नेक्स्ट इज द लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एटा भी गोटे इंपोर्टेंट न्यूज रे थिला जीबी वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर आम इंडियन प्राइम मिनिस्टर along with the leaders of USA, Brazil, Italy, Argentina, Singapore, Bangladesh, Mauritius and UAE and 19 सेप्टेम्बर 2023 रे हेतिला ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 समिट न्यू दिल्ली रे जोटा हेतिला सेते बेले ही तमे माने जानितलो कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेजरली तारो मेंबर कंट्रीज आर इंपोर्टेंट बुझिलो कि जो मेंबर कंट्रीज अछंती फिलहाल 25 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंबर ऑफ जीबीए ओके मुइठी देई देची 8टा G20 कंट्रीज 4टा G20 एनवाईटी कंट्रीज एंड बाकी 13 हेले नॉन G20 कंट्रीज एंड दीज आर द 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मु यार कंटेंट टेलीग्राम रे पकई देबी तमे टेलीग्राम रो नै जबो कंटेंट डोंट वरी फॉर द स्क्रीनशॉट एंड ऑल राइटिंग किछ करे दरकार नै जस्ट सी द वीडियो है ना तापर तमे एटू नै कि ताकू तमे रिवाइज करिवो okay and there are some issues in arctic region तो arctic region मु लिखी छी मु करूची पछरे ताको अलगा उडा सार दबागो then comes to आ गोटे थिला अलायंस ऑफ साहेल साहेल क्वेश्चन ऑलरेडी पचारे सेड साहेल एंड इक्वास दीटा न्यूज रे थिला इक्वास विदाउट द साहेल स्टेट्स हाउ द स्प्लिट इज टेस्टिंग बट देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट देयर इज सम टेंशन सो माली रे जो अटैक हेतिला सेति पय साहेल रीजन इज इंपोर्टेंट तो साहेल रीजन रो टिके हमें देखिबा अलायंस ऑफ साहेल जो अछि तार कोन दिस इज ए कॉमन एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट विल लाइकली ब्रिंग चाड सेनेगल एंड Ivory Coast to join the Sahel Alliance. September 2023 रे the three West African junta-led countries Burkina Faso, Mali and Niger declared the creation of Alliance of Sahel States. This is important. 2023 रे हिची एटा 2023 रे हिची by प्रथमे किए Burkina Faso, Mali and Niger. The countries have since the withdrawn their membership from ECOWAS रो सेमाने withdraw हेई कि Alliance of Sahel कले सेथिपाई ECOWAS and Alliance of Sahel both ही important हला all the three of the alliance member nations have led up have coup since 2020 तो मेन दिन हला एटा भी क्वेश्चन में पड़े को कंट्री रे coup हेची हला तो बुर्किना फासो माली नाइजर ए सब जगह रे 2020 रू coup हेची हला all of these countries like most countries in west Africa were ruled by France because of West Africa सेतिरु ही फ्रेंच लेड सेंटिमेंट एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट ए कंट्री मानकर देखा जाय सेति पय से माने सेतिरु बाहरी चंती which is still accused of new colonialism where France is taking the natural resources with very little in return जो जेमति colonialism रे जहा हुए ट्रेडिशनल सेटा ही होतरा तने सेति पय सेटा एमती हेची however recently Burkina Faso Mali and Nigeria have successfully ousted French military presence in their borders तो सेटी तो फ्रेंच मिलिटरी नाहंती सेटी से माने निजे इंडिपेंडेंट हो गलानी एंड इक्वास कोन कि इट इज ए जनता लेड कंट्रीज junta led कंट्रीज माली नाइजर एंड बुर्किना फासो ऑफिशियली लेट जो माने इक्वास को लेफ्ट हे कि से माने जाइछन्ती सेति पय इक्वास इज ए न्यूज इट इज ए रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इक्वास रो 12 टा अफ्रीकन कंट्रीज अछन्ती हला के बेनिन गाबो
Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Syria, Leone and Togo. एमाने या पूर्व एमाने थिले ए जो बुर्किना फासो माली नाइजर थिले से सब छाड़ी के पळले. ऑब्जेक्टिव कोन इकोएस रो कि टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग सिंगल इकोनॉमिक स्पेस इन वेस्ट अफ्रीका. से इकोनॉमिक मेनली थिला ट्रेड करिवार रीजन थिला. दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, क्रिएटिंग ए कॉमन मार्केट एंड एस्टैब्लिशिंग ए कॉमन करेंसी. ओके, कॉमन करेंसी थिला द इको गोटे कॉमन करेंसी से ट्रेड हम बोली से थिला. बट माने सब ए जो तीनटा कंट्री एठू इकोएस रु बाहर के पळेचंती. तेणु से पॉइंट ऑफ व्यू अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स एंड इकोएस इज इंपोर्टेंट. Next is how will US exit affect the solar alliance? अच्छा हाँ, ISA was in news. ISA रे कौन थिला ग्लोबल सोलर अलायंस जो थिला सेतरे से रिसर्च हब इंडिया रे करियो एस्टैब्लिश करिया पे प्लान करछन्ती बाय 2025. ISA will set up 17 center of excellence for solar R&D and a global capacity center in India as a Silicon Valley for solar, जोटा कि 50 centers global capacity building रो one of them हबो. इंटरनेशनल सोलर अलायंस होचे इंपोर्टेंट दिन सेटा में जानिबा. एटा मेनली COP21 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 सेते बेले सेटा कॉन्सेप्चुअलाइज हेइथिला इंडिया बाय इंडिया एंड फ्रांस हला, जहार की हेडक्वार्टर होचे इंडिया रे गुड़गांव हरियाणा रे हला. 100 प्लस कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स ये सब माने तारा मेंबर अछंती जो माने बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मझिरे जो कंट्रीज माने अछंती. दैट इज इंपोर्टेंट. ओके, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट सोलर एनर्जी यूज इन ग्लोबल साउथ एंड असिस्ट इन अचीविंग पेरिस एग्रीमेंट रिन्यूएबल टारगेट. सोलर एनर्जी को प्रमोट करबा, रिन्यूएबल एनर्जी रो टारगेट को मीट करबा जो मेन ऑब्जेक्टिव. मेंबरशिप ऑफ आईएसए इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स हला, but countries must sign and ratify the framework agreement to become members. main din sala say it is open to all UN members. okay, eta gote thila statement रे भी क्वेश्चन पचार थिला. so इंडिया रे रोल कोन, अचीवमेंट कोन? इंडिया ऑलरेडी 119 gigawatt सोलर कैपेसिटी जुलाई 25 रो न्यू तक आज ऑफ 25 जुलाई 25 रे हे सारिची कैपेसिटी. मे बी इट इंक्रीज हे थाई पारे एबे टिके चेक करिवो. एंड 2030 रो टारगेट हिसाब रे हमर टारगेट कोन ना 500 gigawatt नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी करिबा होची टारगेट, आउट ऑफ व्हिच 280 gigawatt विल बी फ्रॉम सोलर. ओके, सो this is the main dinso. Objective होची mobilizing over $1 trillion in investments for solar energy by 2030. This is the one of the objective, and reducing the cost of solar technologies through aggregation of demand, scaling and innovation, and promoting solar energy adoption. मैंने हला solar energy काम हला. then तार इनिशिएटिव कोन? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एग्जाम रे भी पड़ी छी. ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड विजन हला, इंडिया रो इंटरनेशनल सोलर फंड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तीनटा होची इनिशिएटिव जोटा कि आईएसए अंडर रे निया जाई छी. दिस थ्री आल्सो इंपोर्टेंट. ओके ओके, आउ कोन रहला? आउ जहा जहा न्यूज रे थिला जेमति कि 5 आई अलायंस भी न्यूज रे थिला, सिपेक भी न्यूज रे थिला, E3 न्यूज रे थिला, एशियन थिला, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जोटा एबे रिसेंटली हबा को थिला एक्सटेंड हला ड्यू टू द इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका. एबे एक्सटेंड हला सेटा May 31st रे हबार थिला. so that is why these groupings are in news. okay, 5 is kono? 5 is a multilateral intelligence sharing network shared by over 20 different agencies of English speaking countries. Australia कौन कौन तो 5 रे की अछंती? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट. ए मानकर गोटे ग्रुपिंग जो माने दे शेयर इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज हला. कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज secret coding हेजी आईज ओनली सेति पई हला, व्हिच गिव द ग्रुप इट्स टाइटल ऑफ 5i. ओके, सो एट सेति पई ए दिनसटा 5i रे मेंबर्स होचंती इंपोर्टेंट. ओके, दिस कोलैबोरेशन लेड टू द ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट ब्रूजा जोटा हेतला 1943 एंड लेटर यूके यूएसए एग्रीमेंट हेतला 1946 रे फॉर्मलाइजिंग इंटेलिजेंस कोऑपरेशन. मेजरली 5i कोन तांको काम होला कोन? तांको जो मेंबर कंट्रीज हेले तांको भीतर इंटेलिजेंस शेयरिंग. ओके, तापरे सेटा कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को एक्सटेंड हला. प्रथमे यूके और यूएस रो चलथिला. ओके,
तापर आसला कौन ना सिपेक सिपेक कौन ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एबे न्यूज रे थिला कि पाकिस्तान चाइना वो टू फर्दर डिपेंड माने एबे सिपेक 2.0 डेवलपमेंट जो न्यूज रे अछि तांकर चल जे सेति पे इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अंडर चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट एम्स एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2015 रे लॉन्च हेतला सिपेक. Okay, and it involves a series of infrastructure and energy projects designed to link Gwadar port to Pakistan to China रा Xinjiang region. हला जम जानि छ चाइना रा जोटा इंडिया रा जो पीओके थ्रो रे जो सिपेक कॉरिडोर टा जाउची हला दैट इज इन कंट्रोवर्सी. Then come E3. Iran and the European tribe, France, Germany, UK, collectively E3 will hold nuclear talks. So, E3 is in news. E3 कौन? The group of 3 European countries only. France, Germany and UK. Which work together on a variety of international issues, played a key role in negotiation around the Iran nuclear deal. Joint comprehensive जो JCPOA रो important role play करछन देबे E3 they are actively in the negotiation of the Iran nuclear deal by that is why E3 news. Asian countries, ASEAN the UN and ASEAN are unable to resolve matters of Myanmar. ASEAN had proposed a 5-point consensus, but jaha bhi news re ASEAN is a regional organization of which have established to promote political and social stability among the Asia Pacific post colonial, established with the signing of a Bangkok declaration. ASEAN create heitila members kiye tar headquarter hoche Jakarta. Member होचोंदी इंडोनेशिया, मालेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड काम्बोडिया. ओके, तो दीज आर द मेन जिनस वाला मेंबर कंट्रीज मन रखिबाटा. इंडिया अफ्रीका फोरन समिट एबे जोटा फोर्थ समिट हबा को थिला 31 मे रे बट इट इज शिफ्टेड. तो फोर्थ इंडिया हबा को थिला शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मे रे बट थर्ड समिट के बेतला 2015 रे हितला थर्ड समिट तर एटा तर फोर्थ समिट. इंडिया अफ्रीका फोरम समिट फर्स्ट हितला 2008 रे हला गोटे प्लेटफॉर्म थिला हाई लेवल एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका. द समिट इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग. बट आई डोंट थिंक एबे जेतु शिफ्ट हेई गला आप रो किछ क्वेश्चन आसीबो बट मे बी क्वेश्चन एबे तो शिफ्ट हेलाई बोला पाई बट हेई थिला न्यूज रे थिला जस्ट देखिबे. ता छड़ा आउ किछि किछि इंपोर्टेंट ग्रुपिंग्स G20 क्वाड यूरोपियन यूनियन नाटो एससीओ ब्रिक्स एशियन बिमस्टेक ये सब इंपोर्टेंट. तो तार मेंबर कंट्रीज एटलिस्ट खाली मन रखि चाहतु G20 रो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए एंड EU यूरोपियन यूनियन एंड एबे अफ्रीकन यूनियन भी G20 रे ऐड हेतला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रे. तो G20 लास्ट ईयर भी क्वेश्चन G20 रो पचारछि चिल्ली तार मेंबर अछि कि नै बोली गोटा स्टेटमेंट रे देइतिला. तो एटलीस्ट मेंबर तो मन रख दिला आंसर सेतर बाहर पड़ियो. क्वाड रो यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जेतु क्वाड मीटिंग एबे चलीछि क्वाड इज इन न्यूज. सो क्वाड तो ऑलवेज इंपोर्टेंट. यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन 27 टा मेंबर तार एबे भी यूपीएससी रे क्वेश्चन पचारथिला. स्विट्जरलैंड तार मेंबर नुह मु सदल बारंबार जतले पढैछि कहिछि स्विट्जरलैंड मेंबर नुह. अच्छा एटा टिके पिक्चर टा प्रॉब्लम अछि मिस ओवरलैपिंग हेस. एनीवे ताको तमे ईयू रे 27 टा मेंबर देखिबे. नाटो रो जो 32 मेंबर. नाटो इज इंपोर्टेंट फॉर द यूक्रेन एंड रशिया वार. तार जो कंट्रीज माने अछंती सेटा मन रखिबे. इतरे खाली गोटे जिंस मन रखिबे नाटो जेतेबेले पचरे सेतेबेले बेलारस ऑप्शन ने देइथे. बेलारस को मन रखिबे टिके इंपोर्टेंट की पॉइंट. बेलारस ना से यूरोपियन यूनियन रो मेंबर ना से नाटो रे मेंबर हला. तो बेलारस टा इंपोर्टेंट फैक्टर एंड ऑप्शन ने मु जति के भी क्वेश्चन देखिलिनी ए सब को नेके बनेछि बेलारस विल बी देयर. बेलारस ऑप्शन टा थाए. ओके एंड सेमती एससीओ रो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एमाने मेंबर्स. ब्रिक्स रो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ओके एबे न्यू आसिले कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एमाने सब ब्रिक्स रो न्यू मेंबर्स. तेणु ब्रिक्स इंपोर्टेंट. एशियन 10 मेंबर्स तमरो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड बिमस्टेक रो 7 मेंबर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड. तो ए जो एटलीस्ट ए जो 8टा ग्रुपिंग्स ए गुडा को इंपोर्टेंट ग्रुपिंग्स रो क्वेश्चन पचारिछि. सब वर्ष क्वेश्चन पचारिछि. मु तो लास्ट 3 इयर्स रे आनिछि बट सब वर्ष क्वेश्चन पचारिछि. ओके होपफुली ए ग्रुपिंग्स आपन को हेल्प करिवो एग्जाम रे. मु एक्सपेक्ट करूछि कि एग्जाम रे ग्रुपिंग्स रो गोटे ना गोटे क्वेश्चन आसीथिबो. पैक्सिलिका इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट अमंग देम. ओके सो रिवाइज करो भल से प्रिपरेशन करो एंड माय बेस्ट विशेस विथ ऑल ऑफ यू गाइस
एंड आई होप कि समस्त प्रिलिम्स क्लियर हम मो तरफ जी एफर्ट हवा दरकार कैक्स तरफ जहाँ एफर्ट हवा दरकार वी आर डूइंग डे एंड नाइट माने डे एंड नाइट आम तो आम माने कंटेंट आउ क्रिएशन ये सब जिन जहाँ भी प्रिलिम्स हेल्प हो पारे आम करूँ आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पीएसएस बैच कंप्लीट होला परे प्रोबेबली वी गेट सम टाइम टू डू ऑल द वीडियोज एंड ऑल सो डोंट वरी मैक्सिमम जी करंट अफेयर जहाँ हो पार आम फ्रीली अवेलेबल करेबू तो फ्रीली अवेलेबल आम क्या क्लेम भी करूँ जो मैंने भी फ्री पीएसएस बैच रू पीएसएस कोर्स रू बेनिफिट होती जब से कमेंट भी देदेवे आम से सफिशिएंट है ना वी विल नॉट क्लेम सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर दिस एप्रिसिएशन जो भी कंस्टेंटली लास्ट वीडियोस मोर को देइचंती थैंक यू सो मच ओके नेक्स्ट वीडियो सेमती गोटे मु इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्प्यूटेड रीजंस ऊपर मु करिवि इंपोर्टेंट टॉपिक ओके ओके थैंक यू